अच्छा, हम देसियों में सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारी इन्वेस्टमेंट का जो सारा का सारा दारोमदार है वो सिर्फ रियल एस्टेट के हद तक होता है। अगर आज से आप 2 साल पहले चले जाएँ तो जितनी भी फैमिली गैदरिंग होती थी या अगर हम दोस्तों में बैठे हुए हैं तो सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट का फोकस होता था वो होता था रियल एस्टेट के ऊपर। ये प्रोजेक्ट आ गया वहाँ, इस इलाके में ये प्रोजेक्ट आ गया, ये कॉन्डर प्रोजेक्ट आ गया, ये प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें इतना डाउन पेमेंट है, ये है वो है। तो सारी इन्वेस्टमेंट का जो जोर था वो रियल एस्टेट के ऊपर था। ठीक है, रियल एस्टेट एक इन्वेस्टमेंट क्लास है और दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्लास है। अगर इसको हम डॉलर टर्म्स में मेजर करते हैं तो द बिगेस्ट एसेट क्लास, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन रियल एस्टेट के अलावा भी आपके पास इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस होते हैं। और ये याद रखें, जो कुछ पिछले 5-6 साल में हुआ है ना कनाडा में, वो रिपीट नहीं होगा। यानी कि जो बुल रन एक्सपोनेंशियली प्राइसेस राइज हुई थी, दैट इज़ नॉट गोइंग टू रिपीट। ये एनॉमली थी, ऐसा कभी नहीं होता कि कहीं किसी मार्केट में नहीं होता। ये एनॉमली थी जो मोस्ट लाइकली अब रिपीट नहीं होगी। तो अब क्या ऑप्शंस हैं जो हमें एक्सप्लोर करने चाहिए इन्वेस्टमेंट के हवाले से। आज मेरी बात हो रही थी एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. और हम एक्सप्लोर कर रहे थे कि वो कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने कैनेडियन दोस्तों को बताने के लिए। तो उसमें हमने कुछ ऐसे ऑप्शंस डिस्कवर किए जो कि मुझे भी नहीं पता थे। फॉर एग्जांपल, एक स्ट्रेटजी होती है रॉकफेलर स्ट्रेटजी। उसमें क्या होता है कि हम जो रॉकफेलर था उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि भाई उसने वेल्थ किस तरह से बनाई, फैमिली ओवर फैमिली ओवर फैमिली, यानी कि जनरेशनल वेल्थ उसने जनरेट की। वो कैसे की थी? तो उसकी एक स्ट्रेटजी ये थी कि उसने एक ट्रस्ट बनाया था। उस ट्रस्ट के अंदर हर फैमिली मेम्बर का लाइफ इंश्योरेंस होता था और उस लाइफ इंश्योरेंस को एज अ कोलैटरल के तौर पे यूज़ करके आप मजीद बोरोइंग करते, उसको इन्वेस्टमेंट करते थे। तो वो लंबी कहानी, उसमें मैं एक और वीडियो बनाऊंगा बाद में। लेकिन कहने का मकसद ये है कि देयर आर सो मैनी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर कैनेडियंस टू इन्वेस्ट इनटू। लेकिन ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है कि अगर आप 2-3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें और फिर कहें मुझे 100% रिटर्न मिल जाए। ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है लॉन्ग टर्म के लिए करिए और अपनी फैमिली इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कीजिए। यानी कि आप अपने हद तक महदूद ना रखें। आपने ये देखना है कि आपके जो बच्चे हैं उनको किस तरह से इसको फ़ायदा मिल सकता है। RESP तो एक एलिमेंट है ना। अब RESP में कुछ प्रॉस एंड कॉन्स भी हैं, तो हम RESP के अलावा भी देखते हैं कि अपने बच्चों को किस तरह फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करें, फिर अपनी रिटायरमेंट को किस तरह फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करें। और इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नंबर ऑफ़ ऑप्शंस। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, लेट मी नो। मेरा ईमेल एड्रेस आपके पास है, मेरी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे लिखा हुआ है लेट मी नो। आई कैन कनेक्ट यू वन ऑफ माई फाइनेंशियल एडवाइजर्स। दे कैन गाइड यू द बेस्ट वे टू बिल्ड फाइनेंशियल वेल्थ ओवर टाइम। इट हैज़ टू बी लॉन्ग टर्म, 10+ ईयर होराइजन। ठीक है, ये मत सोचें कि आप 2 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट करके 100% कमा लेंगे। वो फिर गैम्बलिंग है। आपको अगर ऐसा करना है तो आप डोजकॉइन बाई कीजिए या शिबू इनू बाई कीजिए, तो उससे आप हो सकता है ओवरनाइट अमीर बन जाएं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वेल्थ प्लानिंग, इट हैज़ टू बी फॉर द लॉन्गर पीरियड। एनीवे, तो अगर आपको इस हवाले से हेल्प चाहिए प्लीज़ मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए। आई हैव ए वेरी गुड फाइनेंशियल एडवाइज़र हु कैन हेल्प यू आउट ऑन दिस, not only from your own retirement planning perspective, but also for your future, for your kids' future planning in terms of how they can build wealth so that they can उनकी जो पढ़ाई का खर्चा है, जो उनके लिए आगे जॉब के हवाले से
जो उनको एक्सपेंसेस मीट करने होंगे, उन सब की प्लानिंग हम कर सकते हैं. Contact me and I'll be more than happy to help you. Thank you. Are you a non-US tax resident and looking to open a business in the US? Well, this video is very important for you, so watch it till the end. Basically, if you are a non-US tax resident, which means you don't have SSN, which is your tax identification number, which means when you open a bank account or you open a Stripe account or PayPal account or Amazon business account or any business account, you need your SSN number in order to open any of these accounts in the US. Well, if you are a non-US tax resident, which means you don't have SSN with you, you can have another identification which is called ITIN. So ITIN is similar 9-digit number which is used for tax purposes if you are a non-US tax resident. So whenever you apply for a business account or bank account or payment processing account like PayPal or Stripe or even Amazon FBA seller, or registering a business in the US, you can use ITIN instead of SSN. This will help you to set up all of these things even though you're not a US tax resident. So if you're in Canada, Latin America, Europe, UK, Australia, or anywhere in the world, you can apply for ITIN and you can use ITIN to register a business, open up the business accounts, open up the payment processing account in the US, and pretty much do all the tax related stuff using ITIN even though you don't have SSN. So how do you get that? Well, there are some companies available on the internet that will help you to get you the ITIN, but they may charge between $400 to $600 per application. We have a company called ITIN and they are one of the quickest in terms of submitting the application. So they will help you out in terms of collecting the documentation, help you out in terms of answering your questions, and help you out in terms of submitting the application. Now, the typical application process times takes between 4 to 14 weeks, but the ITIN people only take 48 hours to collect the information, help you out in the journey, submit your application, and from that point onwards, it's basically IRS. IRS can take between 2 to 12 weeks depending upon their volume of the applications, but throughout the process, they will handhold you in terms of opening up the accounts, help you to open up the FBA account or Stripe account or PayPal account, or guide you in terms of the entire process. They're pretty quick to respond. They have people speaking English and Spanish and Arabic, and they can give you very competitive rates as well. Plus, if you use my referral link, which will give you extra $50 discount when you purchase their services. So if you are looking to open a business in the US, start your journey today, apply for ITIN. Even though if you're not looking to open a business now, you should have ITIN just in case in the future if you want to open a business, you're ready from tax standpoint. So check the link in the description below and let's get back to the video.